और आई थिंक वो सब वैसे ही डर के भाग गए कि उनको लगा होगा कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है. Life is so scary. We don't need paranormal activity to get scared, you know. The thing about darkness and about अंधेरा is आपको जुगनू भी दिखते हैं. Hi, I'm Priya Bapat. I am Surveen Chawla Hi, I'm Raghav. and you're watching us on IWM Buzz. Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma and today we have with us is the cast and director of Andhera, Priya, Surveen and Raghav sir. Hello. Hi. मैंने ट्रेलर देखा आज, मुझे तो बहुत मज़ा आया. काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी कुछ है इसमें. एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ बहुत लेयर्स है इसमें, मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं. इफ़ यू कैन एलैबोरेट अच्छे से कि हाउ डिफरेंट विल बी दिस पर्टिकुलर सीरीज़, क्योंकि ऐसा अब तक तो नहीं देखा है. This Oh, is that's very great, different. yeah, No, ऐसा it's कभी नहीं देखा है. That's a great compliment you take, really. हाँ. So, it's अंधेरा एक सुपरनैचुरल हॉरर इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है जहाँ पे एक यंग वुमन गायब हो जाती है एंड कल्पना एक फियरलेस कॉप है जो कि उसको ढूंढ रही है एंड ढूंढते ढूंढते शी कम्स इन कांटेक्ट विद मेडिकल स्टूडेंट हु इज हॉन्टेड एंड अ पैरानॉर्मल व्लॉगर who is helping that medical students, which is played by Karanveer and Prajakta. And they start investigating what happened to that girl, which brings them face to face with an evil force that has come alive inside the city. And that is what this explores. Okay. But अलग कैसे है आपने पूछा, तो ये अलग इसलिए है क्योंकि हम लोग यूजुअली हॉरर में क्या देखते हैं, एक लोकेशन है, चार लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे एक भूत था, भूत आया, भूत ने उनको डराया, जंप स्केयर्स हुए एंड उसका एक पास था. भूत ने उनको तो उसका टाइम अभी ओवर हो चुका है, ऑडियंस उससे पक चुकी है, तो अंधेरा इज Okay. मैं भी पक चुका है. But I like that. I like हमने that. सुरवीन I को love ज़्यादा this नहीं difference. देखा ट्रेलर में. Why is that? कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि उनको सुरवीन 14 का अगस्त को पता चलेगा. नहीं नहीं कुछ ऐसा कोई रीजन नहीं है. I think it's just how the story pans out and what the trailer sort of needed to be able to tell you all the exact story and It's also there are many layers to it, Yeah. so Yes. there's no space in the trailer. There's not enough time Okay. to you there's know. basically no space in the trailer for me. आप सब कुछ ट्रेलर में ही देख लेंगे तो फिर तो आप क्या देखेंगे? सीरीज में क्या देखेंगे? Okay. And the आपको- idea behind the trailer was to create that question, to create No, that. but I'm saying a intrigue. trailer also is meant to give you a small little glimpse Yeah. See, of what are you in for, Yeah. right? In terms of a story की कहानी क्या है? ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है. उसमें okay. her presence creates that intrigue. No? Yes, I wanted to know कि when will Surveen come, when will she come? Because मैंने आपको And देखा when you see opening. her, you don't know what is she going to हाँ. do. You know this one is a cop. You know this one is a paranormal. हाँ. नहीं, but I'm basically the founder of a wellness center. No, not just that. Like we also see you in the end, no? तो वो एक business woman का ये इससे क्या नाता है? हाँ. You go back and check the last frame of the अरे trailer यार and check. कितना दिन रह गया है? 14th August. Just go watch it now. All your Definitely. questions That's will the be intrigue. You should watch the answered. show. How is it working with Excel, with Prime Video? Were there any challenges जो आपने face किया? Set पे कैसा vibe था? Seamless. Okay. Absolutely seamless. I mean, actually, the only people that we were constantly not in touch but always working with were Raghav sir, Gaurav. Once in a while, I think Karan. Karan will Mohit. also. Mohit used to be there. Excel, Farhan, and Ritesh sat and backed the show. Oh. You know, so they were never on set. I think what they did was sort of how do you blanket something, Yes. you know, that you back and you make sure that everything's running smoothly. So I think sometimes, you know, also I understand that it's a how do I put it? You kind They of gave us the nurture, wings to yeah, fly. you kind of nurture it, no? So
and that is a very, very important job on a show like this for a genre like this, you know, because we've, you know, spoken about it in so many interviews today, wherein why in India, and I'm just giving you some fodder, why in India don't you see it? Because there's not enough backing to projects like this, to this genre. So I think kudos to Farhan and Ritesh and Excel Definitely. for putting in that faith in the story and backing this show, and Amazon of Yes, course. definitely. Yeah. पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो क्या रियल लाइफ में आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? तुम्हारे पीछे कोई है? देखो तो सही, अंधेरा है। अंधेरा है। Sorry. No, that was good. आंखें बंद कर, आंखें बंद Okay. कर। अंधेरा है। I thought you were going to scare me. You should have walked up to her. This was enough, no? God. हाँ, तो क्या ऐसा कुछ फेस किया आप लोगों ने? In real life? Yes, in real life. I haven't faced it, but मतलब ऐसे कहीं सुनी बहुत सारी स्टोरीज है बेचारे मड आइलैंड को लोग इतना बोल रहे हैं। सब लोग बहुत शूट करते हैं यार। एक वाइट साड़ी वाली औरत की कहानी है ना, हमने एक्सपीरियंस नहीं की है, क्योंकि जब हम थे वहाँ पे तो हम सेट पे थे, वहीं पे हम क्रिएट कर रहे थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हमको जरूरत नहीं पड़ी, और आई थिंक वो सब वैसे ही डर के भाग गए कि उनको लगा होगा कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है। ऐसे सुना बहुत है कि होते हैं वहाँ पे, सफेद साड़ी वाली औरत, देन सम, हाँ, रात को नहीं जाना चाहिए। हाँ? रात हाँ, को ऐसे नहीं 3-4 बजे आती है वो। टाइम भी बता इनको। हाँ, क्योंकि मैं टेलीविजन शो का शूट कर रही थी और ऐसे नाइट शिफ्ट करके ऐसे और टाइम है 2 से 2 की शिफ्ट होती है, थोड़ा एक्सटेंड होता है तो 3 बजे पैकअप होता है, तो 3 बजे के पैकअप के टाइम पे वो डर बैठ जाता है। ऐसे तो आर्य कॉलोनी इज आल्सो सो स्पूकी, नो, आर्य इज आल्सो स्पूकी, एंड स्पेशली लॉन्ग बैक व्हेन थोड़ा सी ठंड होती थी बॉम्बे में, मुंबई में, तो थोड़ी सी फॉगी और यू नो यूज्ड टू बी दैट निप इन द एयर, और उस टाइम पे ऐसा That रास्ता इतना is सब थोड़ा कहने के dangerous. बाद एंड दैट वाज द टाइम जब, मतलब मुझे याद है मैं ऑटो में घर जाती थी रात को 3 बजे, when I used to work for Balaji that time. Oh my God, those were really creepy times in the night when you had to go back at 3-4 o'clock Yeah. ऑटो में बैठ के। Have you ever Having said walked that, in guys, Yari Mumbai is a Road? very safe Yari place to Road, stay. yeah. Yari Road at 3 o'clock in the night. Have you ever walked through those streets with those dogs? Oh, Nothing God. more scary than that. I know, I haven't. Big dogs, they come and surround you at night. And I mean, life is so scary. We don't need paranormal activity to get scared, you know. Sometimes normal is enough. Potholes are so scary. Maybe a booth It's lies like a black inside hole the only. pit. The pothole is like a black hole. Imagine from the black hole. imagine from the POV of a tire. Oh, आया नहीं। If we talk about अंधेरा, अंधेरा is a very negative word, ऐसा somewhere. थोड़ा deep है, मतलब थोड़ा सा आपको serious zone में लेकर जा रही हूँ। क्या कभी ऐसा कोई phase है आपकी life में जहाँ पर आपको ये darkness महसूस हुई? हाँ यार, आते रहते हैं phases. Every hardship is a phase where it's symbolic of some kind of andhera, but I also feel andhera is not something to fear because it's almost like an expedient means. So if I put darkness as a symbolic of a hardship, a time that you don't desire, anything that you don't desire or expect or want to be in the middle of, then that is andhera. But you have to go through it as a journey to be able to get on the other side, which is light, right? Wow, So very well वाह, explained. वाह, 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 वाह। Profound. हर अंधेरे के बाद 4x. रोशनी भी आती है. Yes, truly. What about you, Priya? Surveen ne bool. Okay. No, I said this earlier. और darkness सबके लाइफ में आता है यार, ऐसे दिन जब you really feel low. Depression or depress is a very big term, and I don't want to use it loosely. You just like feel that. low. You feel very sad sometimes. Just feel very sad inside you. But also a very, very, very beautiful thing about darkness and about अंधेरा is आपको जुगनू भी दिखते हैं, fireflies. तो वो तो आपको अंधेरे में ही दिखते हैं. और like she said, वो आपको वो छोटा सा रोशनी की किरण दिखाते हैं, वो आशा दिखाते हैं that That there is, I is a think, light on enough. the other Yeah. side of the tunnel.
सुरवीन ऐसा कह सकते हैं कि ये साल आपका ही है, मतलब क्रिमिनल जस्टिस, मंडाला मर्डर्स, देन अंधेरा. आर यू हैप्पी? Of course I'm fine. ये सब लोग ऐसे नाम ले रहे हैं ना. और कोई फीलिंग हो ही कैसे सकती है? आई एम सेइंग, आई मीन रियली आई कुडंट बी हैप्पियर एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स दैट इट टुक 20 years to get a certain kind of recognition as a reward. It's rewarding, it's gratifying, and it only drives me more. थैंक यू सो मच. Thank you. विल डू अ वेरी क्विक हु इज मोस्ट लाइकली सेगमेंट करेंगे. आपको एक दूसरे का नाम लेना जो भी क्वेश्चन पे सूट होगा. Okay. सो विल डू वेरी क्विकली. Okay. हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट इंजर्ड मोर? Oh, you? Oh, I'm actually. I'm the clumsiest one. Yeah, you मैं can चलते take your चलते own गिर name जाती हूँ. also. Okay, in Prajakta. real life. Really? Really? Nice. I don't know. आपको पता है मेरे को पर्सनली मैं मतलब ऐसा लगता है कि इंजरी ढूंढ रही है कि सुरवीन कहाँ पर है. Really? Really, in my life, like So why didn't you take your name? I took na. Okay. See, right now also I'm sitting with the an injured back. Who is most likely to attract with their charming personality? Attract What? what? Attract what? Attract people. Oh. I mean, we both can't say no to No, this. no, Yeah, we do. Yeah, Do. yeah. we do. Who- So, आप भी बहुत charming. Who is most likely to prank or get pranked? I can get pranked. I can never prank. I'm Like I'm quite being likely to get to prank. हाँ, वो मुझे लगा था. Prankster and getting pranked. Getting हाँ. pranked. So what about Prankster you? and target. I'm boring person. I'm sitting behind the monitors watching Watching prank. watching things unfolding around me. Or he can may probably hold the phone and record the prankster pranking the target. BTS. I could probably scheme the prank. Scheme the prank. But I won't be the one But executing you won't execute it. I am wholeheartedly into execute a prank. Who is the foodie? Not me. Really? No, not really. सुरवीन तो But लगता घर है. का खाना foodie. I'm Okay. a घर का खाना foodie. हाँ, घर का खाना, but I'm not like foodie. मुझे वरण भात भी 2 रोज. नहीं मुझे ऐसा नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या खा रही हूँ, बट हाँ मुझे घर का खाना, I'm a घर का खाना completely, home food person. Who is the कंजूस? I don't बड़े think दिलदार any of us इंसान is हैं। कंजूस. बड़े Okay. बड़े दिल हैं हमारे. Who can dance anytime, anywhere? मुझे आइसक्रीम खिलाई थी नहीं कहाँ पे सर? अच्छा, Ice cream तुमने we नहीं got खिलाई थी? cakes and all. Cake, Lots yes, of yes, desserts yes, and yes. cakes and everything. You can dance anytime हाँ, who anywhere. can Yeah, dance yeah. anytime, anywhere? Who is मासूम co-star? सबसे sweet. नहीं मासूम just to show or genuinely No, मासूम? genuinely. करण Karan भी bhi. Yeah, I'm not work. Yeah, and thank you so much. I don't know, it comes across like that only. na? Who Very has more- sweet, Very सा, sweet. हाँ. Very sweet. Who has more tantrums? Nobody yaar. We've not experienced that on this. सर बताएंगे. बता nobody ही had दो आप. tantrums. अब बोल दो कोई बात नहीं. नहीं, nobody had tantrums. गौरव? No, not Gaurav also. No. I'll name the person. Dipanshu. Dipanshu was the first AD on the set who had the job of whipping all of us to keep on time. चलो चलो नहीं हो गया नहीं अभी नहीं ब्रेक ओवर चलो अच्छा. I think Dipanshu. Who is always dressed up? Not me. If I'm not shooting or anything, no. Not at all. I'm shorts, t-shirt, flip-flop, Pajama person chappal. forever. That is good. Chappal. Comfort before style. Comfort before anything else. Who can be a good travel buddy? Like I'll not be a good travel buddy, No? I'm sure. No. I think I can be a very good travel buddy. I'm up for anything and everything. Yeah, I agree. तुम्हें कैसे पता भाई? ऐसा लगता है मुझे वैसे वाइब आती है आपके अंदर से. Depends. I can be a good travel buddy. Depends किसके साथ जाना है. Okay. Lastly, who is a good listener? हाँ. दोनों ने एक दूसरे अपना खुद का नाम. ऐसा ही है. Fact है. मैं तो यहीं पे देख रही थी and can't think of anybody. Actually, you, Karan, He's also he's also very like shant and Gaurav.
Gaurav also. पर मैं तो तीनों ही बहुत अच्छे लिस्टनर्स थे, अब But हमारी Gaurav बहुत cracks बकवास सुनी है very lame jokes. Listening के लिए It is important है, you have to हाँ, stop talking. Yeah. दोनों ने खुद का नाम नहीं लिया है, दोनों को नहीं लगता कि वो लोग खुद मैं- गुड लिसनर है. He said ना listening के लिए you have to stop talking. हाँ. I तो keep talking only. मैं सुन सकती हूँ, but अभी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू छोड़ो. No, she listens. All right. Yes. Thank you Really, I so do. much Yes, you for this conversation Thank with you. me.